जिम के बाद काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है थॉट्स में, यू नो। कोई भी जो फाउंडर है या फिर अगर स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है या इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, यू शुड हैव समथिंग दैट resets your mind every time. For me, it's like football and gym. So whenever I have a lot of clutter in my brain, I go and train very hard. So it clears up my mind. Also take out a lot of the stress that I have in my mind and on myself. And yeah, man, like it is like a cheat code in life. So whenever you have a lot of stress, go train hard. Train like there's no tomorrow, and you will feel a lot better. For some people, they do like running, they go cold plunge and all of those things. For me, it's like only football and gym. It's really, really refreshing to have something like this in your life. And I have seen a lot of people who are not into like sports or in any type of activity, they suffer a lot mentally. Have something that is your escape from the reality, and sports helps a lot in this. And yeah, man, it's gonna be a long day now, so I'm gonna go on my desk from here now and work on the new brand that I'm working on this past couple of days, and then I'm gonna build some ads and then launch it at midnight today. सो मैं जस्ट अभी एक ब्रांड पे काम कर रहा हूँ जो कि रिसेंटली आई एम गोना लॉन्च, एंड आई थिंक द ई-कॉमर्स विल बी डिसरप्टेड बाय एआई, यस, बट मेजर चंक जो कि हमेशा रहा है किसी भी बिजनेस में या कहीं से भी इंडस्ट्री में, वो यही रहा है कि जो एग्जीक्यूशनिस्ट होते हैं दे विल ऑलवेज डिफीट द वन विद द राइट इंफॉर्मेशन, बिकॉज if you have the information but you have no execution, it is meaningless. So let me just एग्जाम्पल के साथ देता हूँ जो कि मेरे लिए भी काफ़ी रिलेटेबल है कि starting will always be very hard. So just like this content creation, the starting period is gonna be very hard, so I'll have to put like a lot of effort into it. So उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरा बिजनेस का जो टाइम है मेरे को उसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ रहा है टू दिस कंटेंट क्रिएशन थिंग. इसकी वजह से मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा क्योंकि आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर. सबसे मेन चीज़ ये है कि मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं जस्ट एक फाउंडर हूँ who has realized the importance of content creation in today's period. So that is the only purpose why I'm coming into this game. So also this is part of my business. This is not my business. This is another part of my business. It's like a marketing department in a business. So content will be very important in it is I think it is already very important in a lot of businesses who are running in today's period, and the businesses who will not have their own content team will suffer a lot, because this is the only interaction that you have with your customer, the real interaction, because they are not gonna find you on Google now, they are not gonna find you randomly anywhere else now, because people hardly pay attention to the hoardings and boardings and all those stuff, but they do pay attention on your social media. They will look at you on your social media, what is your presence, what do you do, what is your culture, and how you treat your customer, what is your services. So yeah, content creation will be the first interaction of your customer with you, then the landing page and the website and the sales process
is the middle and bottom of the funnel, but the top of the funnel will be content creation from now on into the business side of the things. And दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई एम डूइंग दिस. फिलहाल तो मैं अभी इस ब्रांड पे काम कर रहा हूँ जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट डन हो गया. और द मेन थिंग इज़ इसको मैंने 3 दिन के अंदर बिल्ड किया, which is amazing because it used to took me like 10 to 15 days to actually build something so good and something that that is like so professional. The landing page that I built within a day with Claude on automation, like this is like a amazing thing that has happened. And this is a complete brand. Okay, this is from like, ये ऐसा नहीं है कि कोई ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट है. कंप्लीट ब्रांड मेड फ्रॉम स्क्रैच. एवरीथिंग इज डन विद इन like 2 or 3 days, and everything is done by AI. And I'm launching the first phase of the ads tomorrow, and we will see what will happen with this. And also another thing that in e-commerce that I'm looking at, and I'm also observing a lot in this space, is that usually what people do in the drop shipping space is they find a winning product and then try to scale it and make it profitable. But now what I'm looking at and what how I'm observing things, the this thing has changed. Okay, also this is with the people who have certain experience in this space, in e-commerce space. Pick a product first and then make it a winner. That is the shift, and that is how I'm gonna work on from now onwards. Because the you can create a perception around your product. It is how you target the audience, how you communicate with your audience in your content and in your website and in your product. So that is how I'm looking at it, is to take a product and then make it a winner. And yeah, just keep doing what you do for longer period of time, and it will work out eventually. So the goal is to create an offer that is that will bring at least 10x to as honest. So इस टाइप की सेल जो होती है ना, यू कैन ओनली डू लाइक वंस इन लाइक 3 or 6 month, क्योंकि अदरवाइज तुम्हारे जो कस्टमर है ना वो फाइल हो जाएंगे और तुम उनको सिर्फ इस सेल के लिए खो दोगे. अगर मैं डिफाइन करूँ तो इस तरह होगा कि वो फिर सिर्फ सेल का ही वेट करते रहेंगे अगर तुम बहुत ही रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली ऐसी सेल्स करवाते रहोगे. सो इसलिए इस टाइप की जो सेल्स होती है ना वो वंस इन अ 3 month और वंस इन अ 6 month करनी चाहिए. सो मैं अपने ब्रांड के साथ जो कि काफ़ी देर से चल रहा है उसको प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में, जो कि होगा फ्रॉम 4th to 10th. So today is 26, so almost like after 10 days. So what I was planning is हाँ, तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ उसमें ये है कि स्केल करने में तो 1 crore तक ऑलमोस्ट ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट मंथ वी विल हिट 1 crore a month विद दिस ब्रांड. एंड हमारा जो बजट है एड्स का सिर्फ इस सेल के लिए वो होगा अराउंड 5 lakh फॉर दिस फॉर लाइक 5 days. एंड 5 days इसलिए क्योंकि अगर वो जो तुम्हारी सेल अगर ज़्यादा लंबी होगी ना तो तुम्हारा रोएस उतना गिरता जाएगा हर दिन, क्योंकि कस्टमर जो है वो सेल से यूज हो जाएगा एंड वो ड्रॉप रोएस जो है वो ड्रॉप होते रहता है. तो इवेंचुअली तुम नॉर्मल रोएस पे आ जाओगे विद इन लाइक 5 days. इसलिए 1 to 5 days इज़ अ स्वीट स्पॉट फॉर दिस काइंड ऑफ सेल्स. सो मेरा ऑफर इस सेल में जो है काफ़ी सिंपल सा रहने वाला. मैं इसको buy 1 get 1 free का एक सेल बना के प्रेजेंट करूँगा एंड अपनी वेबसाइट पे लाइव करूँगा. सो विद लाइक 2 lakhs. ओके, तो इसमें कैंपेन स्ट्रक्चर जो है मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मैं क्या टारगेट करने वाला हूँ. मेनली मैं उन कस्टमर को टारगेट करूँगा जो पिछले 6 महीने में हमारी वेबसाइट पे आए तो है लेकिन उन्होंने परचेज़ नहीं किया. उनके पास कोई रीज़न नहीं था परचेज़ करने का, इसलिए उन्होंने परचेज़ नहीं किया. सो अगर आप देखोगे कि नॉर्मली वेबसाइट पे या कोई भी स्टोर पे ना
अराउंड 2 to 3% का कन्वर्जन रेट रहता है। तो उसमें जो लाखों लोग हैं जो मेरी वेबसाइट पे आए हैं लेकिन उन्होंने परचेज़ नहीं की, उसका मेन रीज़न ये होता है कि उनके पास कोई वैलिड ऑफर नहीं होता या वैलिड रीज़न नहीं होता है कि वो परचेज़ कर सकते उसको एट दैट टाइम। सो इस टाइप की जो सेल होती है वो बेस्ट होती है उन टाइप के कस्टमर्स के लिए। इसलिए जो 50% ऑफ मेरा बजट है वो जाएगा सिर्फ रीटारगेटिंग कस्टमर्स को, और जो बाकी है वो जाएगा बाकी एड्स में होता है बाकी ऑडियंस में, जैसे एडवांटेज प्लस या ABO जो मैं टेस्ट करूँगा इसके लिए, या जो रेगुलरली मेरे चल भी रहेगा वो इस 50% वहाँ पे जाएगा, 50% जो होगा रीटारगेटिंग पे जाएगा। सो इसके साथ सिर्फ मेटा पे नहीं, ईमेल फ्लो, दैन व्हाट्सएप फ्लो एंड SMS फ्लो, ये तीनों भी जाएंगे, जिसकी वजह से कस्टमर जो होंगे अवेयर होंगे कि ये एक बड़ी सेल आ रही है। एंड इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे सेल अगर मेरी स्टार्ट होगी 4 से, सो 3 और 2 को मैं एक कैंपेन स्टार्ट करूँगा जहाँ पे छोटे बजट के साथ ही, लेकिन इन रीटारगेटिंग कस्टमर्स को बोलूँगा कि ये सेल 4 से स्टार्ट होने वाली है, और इसका बजट जो होगा अराउंड आई थिंक $100 पर डे का होगा, जिसमें मैं इनको इन्फॉर्म करूँगा। सो ये इतना सा जो लॉस है ये मैं ले सकता हूँ अपने लाइक $200 का लॉस जो है वो मैं ले सकता हूँ, बट ये लॉस नहीं है क्योंकि ये वार्म अप करेगा मेरी ऑडियंस को उस सेल के लिए एंड प्रिपेयर करेगा। तो टारगेट ये है कि इन 5 से 6 दिनों में वी कैन पुल ऑफ 50 lakhs। सो दिस इज़ अ रियलिस्टिक टारगेट जो कि मैंने लिया है अराउंड 40 to 50 लाख, बट जो अनरियलिस्टिक टारगेट है डैट इज़ अराउंड लाइक 60 lakhs, जो कि मैं ट्राई करूँगा हिट करने का इससे, एंड लेट्स सी वेयर इट गोज। इफ़ इट वर्क्स देन वी विल प्रॉबेबली एंड द नेक्स्ट मंथ ऑन 1 crore सेल, क्योंकि फिर कूल डाउन पीरियड होता है अराउंड सेल के बाद ऑलमोस्ट 10 days का, फिर उसके बाद रेगुलर जो सेल था वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो इफ़ वी डू अराउंड 50-60 lakhs, around even if we do like 40 to 45 lakhs sale in this period, then we can end the month with around 80 to 1 crore depending on how well we did on the sale. Yeah. So this is how you should also prepare for it.